Hello everyone, and this is the third episode of Unhinged with Tushar. So first of all, मैं थोड़ा सा बीमार हूँ, मेरे को थोड़ी खांसी हो रही है, तो अगर मैं बीच में रुकूँ या कुछ करूँ तो समझ जाना कि अच्छा ठीक है मैं थोड़ा बीमार हूँ इसलिए रुक गया। मे भी शायद थोड़ा सा गला ख़राब हो गया होगा, खराश हो गई होगी, समझ जाना। ठीक है। बट द थिंग इज़ कि मैं इस पॉडकास्ट को रियली रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। आई रियली वॉन्ट टू रिकॉर्ड इट फॉर यू एंड फॉर मी, बिकॉज मेरे को पता है कि अगर मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करूँगा तो ये पॉडकास्ट मैं छोड़ दूंगा। तो या दैट्स रियली इंपॉर्टेंट कि मैं वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करूँ, इसलिए मैं थंबनेल टाइटल वगैरह ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। आई एम जस्ट अपलोडिंग इट विद मिनिमम एफर्ट्स पॉसिबल। लेटर ऑन आई वर्क ऑन इट, बट स्टार्टिंग के 10 एपिसोड्स में जस्ट डोंट एक्सपेक्ट टू मच क्वालिटी फॉर मी। कंटेंट क्वालिटी तो मैं मिलेगी, बट जस्ट डोंट एक्सपेक्ट टू मच क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ थंबनेल टाइटल डिस्क्रिप्शन या शेट लाइक दैट। यू नो द प्रोडक्शन क्वालिटी लाइक पीछे अभी भी बैक पड़ा है मेरा, हमेशा की तरह। तो या तो लास्ट वीक मैं किसी से बात कर रहा था एंड दैट गाय जस्ट मेंशन कि लाइक मैंने तुम्हारा पॉडकास्ट देखा एंड ही वाज लाइक कि तुम जाके बस रैंट करते हो। एंड आई एम लाइक कि या काइंडा लाइक मुझे लगता है कि मेरा बोलने का या फिर लिखने का तरीका ही ऐसा है कि लोगों को लगता है कि मैं रैंट कर रहा हूँ। ठीक है। एंड आई थिंक आई एम गोइंग टू ओन अप टू द फैक्ट कि हाँ, मैं हर हफ्ते आता हूँ और अपनी ऑडियंस के सामने 15 मिनट बैठ के रैंट करता हूँ। अब ऐसे कर करके अर्पित वाला फेमस हो गया तो मैं नहीं हो सकता क्या? बट मेरा गोल अलग है। आई स्टार्टेड दिस पॉडकास्ट बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू बी मोर अकाउंटेबल एंड आई लाइक पॉडकास्टिंग, आई लव पॉडकास्टिंग। मैंने यूँ ही नहीं 60 पॉडकास्ट कर रखे हैं। सो आई लव पॉडकास्टिंग, सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। इफ आई गेट द ऑडियंस इट्स गुड, इफ आई डोंट गेट द ऑडियंस दैट्स ग्रेट एज वेल। नाउ लास्ट वीक मैं रैंट कर रहा था इस बारे में कि जब तुम ज़िंदगी में एक चीज़ ठीक करने लगते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में कितनी चीज़ें बिगड़ी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से तुमने कल ले लिया जिम जाने का एग्जाम डिसीजन। गुड डिसीजन, गुड फॉर यू। बट जैसे ही तुम जिम जाना शुरू करोगे तुम्हें पता चलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें अपने वर्क और बाकी सब कामों में से 2 घंटे निकालने पड़ेंगे ताकि तुम जिम जा सको। फर्स्ट प्रॉब्लम। उसके बाद तुम्हें अपना स्लीप शेड्यूल ठीक करना पड़ेगा जो कि तुमने बिल्कुल बिगाड़ रखा है रील्स चला चला के, क्योंकि तुम्हारी रिकवरी ज़रूरी है। और उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा तुम्हें खाना भी ढंग का खाना है, और वो खाना ढंग का आएगा कहाँ से वो तुम्हें अभी नहीं पता है। तुम्हें खाने का भी प्रॉपर देखना है कि कौन कब क्या खाना है। ठीक है। सो समझ में आया कि तुमने एक डिसीजन लिया कि तुम्हें जिम जाना है और तुम्हें पता चला मेरा स्लीप शेड्यूल फक्ड अप है, मेरा फूड फक्ड अप है, मेरा फोकस फक्ड अप है, मैं काम पूरे दिन करता रहता हूँ क्योंकि मेरा फोकस के लगे पड़े है। तो मेरे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है ज़िंदगी में। एंड दैट समथिंग सिमिलर हैपन टू मी। मैंने एक डिसीजन लिया कि आई इम्प्रूव माई रीडिंग हैबिट्स और मैं पॉडकास्ट शुरू करूँगा। और मेरे को इससे पता चला कि मेरी ज़िंदगी में भतेरी प्रॉब्लम है। भतेरी इज़ अ हरियाणवी वर्ड। मेरी ज़िंदगी में बहुत ही सारी दिक्कतें हैं। मेरा भी स्लीप शेड्यूल फका हो रखा है, फोकस के लगे पड़े हैं, मतलब बहुत सारी दिक्कतें हैं। ठीक है। तो आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव अपॉन देम, बट द थिंग इज़ कि अगर मैं सारी चीज़ें एक साथ इम्प्रूव करने लग जाऊँगा तो मैं फेल हो जाऊँगा। तो वट आई एम ट्राइंग टू डू इज़ आई एम ट्राइंग टू रीड एवरी डे एंड दिस इज़ वॉट आई वॉज रीडिंग। अगर तुमने पिछले 2 एपिसोड देखे होंगे तो तुम्हें पता होगा कि दिस इज़ वॉट आई एम रीडिंग। सो आई हैव रेड इट। ग्रेट बुक, मैंने सेकेंड टाइम रीड किया एंड इट्स अ ग्रेट बुक। द फर्स्ट थिंग द फर्स्ट good thing about this book is ki great writing. I know I'm not a great writer. I cannot judge George Orwell's writing. George Orwell was a great writer of his time. As an audience, what I liked is ki every sentence was engaging. There was no as a writer, I could not find a sentence that was irrelevant to the story at all. Every sentence was just moving the story forward. There was no fluff. There's a lot of books out there जिसमें बहुत ज़्यादा fluff होता है बिना बात का. This was not that book. This book was just great in writing terms. This book was just great in writing terms. Like no critique about that. I just cannot. I don't think I'm a good enough writer to say anything about George Orwell's writing. But yeah. Um, Now, the second thing I liked about this book was this book is relevant until now. This book was written in 1945, published in 1945. Not don't know when it was written, but it was written. It was published in 1945, and it's still relevant today. But it's not just relevant in terms of the political satire. Like political satire is one thing. Like this book does a political satire of Soviet Union. It is very much self-evident. अगर तुम थोड़ा सा भी बुक की हिस्ट्री के बारे में डिगअप करना शुरू करो, इट्स अ पॉलिटिकल सटायर. बट अदर देन द पॉलिटिकल सटायर, लेट्स से यू आर दिस गाय, यू जस्ट अ नॉर्मल गाय, और तुम्हारे से ऊपर एक बंदा पावर में है.
और तुम और वो अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहा है, तो तुम यहाँ से तो चिल्ला रहे हो कि यार वो बंदा अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहा है, ठीक है। अगर मैं होता ना उसकी जगह, तो मैं अच्छे काम करता। बट विल यू रियली डू द गुड वर्क? लाइक अगर तुम्हारे पास उतनी पावर है तो क्या तुम उनके जैसे नहीं बन जाओगे? तुम्हें लगता है दिस अ रियली हाई चांस तुम उनसे भी बुरे बन जाओगे अगर तुम्हें उतनी पावर दे दी, ठीक है। And I think this is the delusion that people live in. People think that they are good, but I don't think, like, as Salvo Zizek says. Salvo Zizek is a Russian philosopher. Russian, I can't remember, but yeah, he's a philosopher, and he says people are monsters. People are secretly monsters, and I truly believe in that. I really think like people are just monsters from inside. Like अगर यहाँ पे laws नहीं होते, morals नहीं होते हमारे पास, ठीक है, हमें morals नहीं सिखाया जाए, चलो मॉरल्स तो कीपिंग एट असाइड, आई थिंक अगर तुम वो भी हटा दो, पुलिस सिस्टम वगैरह भी हटा दो, पीपल विल बी डूइंग हॉरेबल शिट, पीपल विल बी डूइंग हॉरेबल हॉरेबल शिट। तो what I liked about this book is कि like it puts them into the situation, the animals in the farm are into the situation they were criticizing, ठीक है। एंड यू शुड थिंक लाइक दैट रादर देन थिंकिंग कि ओके आई एम अ गुड पर्सन, जब मैं उस बड़ी पोजीशन पे होऊंगा तो मैं अच्छा इंसान हूँ। आई डोंट थिंक पीपल शुड थिंक लाइक दैट। आई थिंक पीपल, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। आई वाज सीइंग दिस रील, like Instagram reel. I watch short form content. I'm watching short form content like too much nowadays. So I don't know why I should stop doing that, but yeah, I was watching some. So I was watching some reel, and there was this girl. There was this girl, and her husband asked her, "Ki, will you cheat on me? Can you cheat on me?" That was the proper question. Can you cheat on me? The girl said yes. And obviously, no husband wants to hear that. That okay, this girl can cheat on me, and she's. But the thing she later said was, "Ki, I know I'm capable of cheating, so I will never put myself into a situation where I can cheat." And I think that's the real way forward. It's really easy to say, ki I won't cheat, I'm a good person, I won't cheat. Most of the guys out there, including me, okay, I think we're not cheating because we just don't have a lot of bitches. I don't think I should be calling bitches, but yeah. The thing is, ki, like, if every guy out there is getting a lot of girls, they they'll start cheating left, right, and center. Most of the guys. It's true for most of the guys. क्योंकि मैं एक लड़का हूँ और मेरे को ये बोलते हुए अच्छा नहीं लगता, बट लड़के हरामी होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक इट्स बेटर टू कम फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव कि ओके आई कैन चीट, बट आई शुड नॉट चीट बिकॉज दिस रिलेशनशिप इज मच मोर वैल्यूएबल देन वन टाइम फ्लिंग। And yeah, I think that's how people should think about cheating and everything. Cheating, commitments, there is a real chance, okay, I can, cheat on this person, and there's a real chance कि like I can, leave this person, but I will not leave this person because this person is really important to me and this relationship is important to me. There's a high chance I can break up. There's a high chance I will, get, frustrated someday and I would like to break up, but I won't do that, you know. Obviously, if there are certain limits, there are certain rules around it. Obviously, you cannot be like कि हाँ कुछ भी करे, कितने भी थप्पड़ मारे मेरे को, भाई मैं तो रिलेशनशिप में रहूँगा, ऐसा नहीं होता obviously. But yeah, when you think कि okay, there's a I'm not a very, I'm not great at commitment. I'm just only human, but I am aware of this fact that I'm not great at commitment and I'm going to commit to this person. And I think that's how real change happened, rather than just thinking नहीं 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 मैं तो commitment, I am commitment, I love commitment so much, I will never leave this person, this person is really important to me, and shit. I don't think that works. And thinking that you're a really good person, I don't think I'm a really good person, but I just know like okay what I'm capable of, and I can prepare myself accordingly. That if I know like I'm capable of cheating, I will not put myself into a situation where I can get a chance to cheat. Okay, and if I'm into a situation where I know like cheating can happen, I will be more alert. And I think that's how people should think about it. I think Peterson also talks about it a lot. Like, you think you are not an evil, but if you will be in a situation, you will be evil. The second thing about this book is that this book was converted into a movie for a anti-Soviet propaganda. ठीक है, and it was funded by CIA. CIA is the intelligence body in America. तो
That brings us to the question, is art only entertainment? I have a pretty, I don't think I have a pretty strong opinions about it, but I think art is something that brings change. So the every piece of content out there is not art basically. I think art can be anything. I think even a reel can be art if done properly, but not every reel is an art. I think most of the reels are not. Most of the YouTube videos are not art. But great books, great paintings, and everything is art because they brought real change. This book was actually used as an anti propaganda tool during the Soviet times. It has a great impact on history. So that's why this book is a piece of art. अगर तुम अगर तुम मंटो की कहानियाँ सुनोगे, जैसे यू कैन नॉट एक्चुअली अंडरस्टैंड वट 10-year-old prostitute thinks. A 10-year-old prostitute, even thinking about it is, kind of icky. You cannot be a part of her world. बट वेन यू रीड द स्टोरी बाय मंटो, जिसमें एक लड़की को उसकी माँ ही एक आदमी को दे आती है, और वो आदमी जाता है और उसके साथ कुछ करता भी नहीं है, ठीक है, और फिर उसको बीच पे घुमा के अगले दिन वापस ले आता है, और वो उस आदमी उस 10 साल की बच्ची को 10 रुपये देता है, और वो बोलती है कि तुमने कुछ किया ही नहीं तो पैसे कैसे, और वापस दे के पैसे वापस आ जाती है, बिकॉज शी जस्ट सो हैप्पी अबाउट विजिटिंग द बीच. और मैं तो ये कहानी ढंग से नहीं सुना, लेकिन जब तुम मंटो को तुम एक्चुअली रीड करना शुरू करते हो, तुम पता चलता है वाओ, दिस इज लाइक pretty powerful story, and it actually brings a little change in you. It brings up emotion in you. And I think that's what art is supposed to do. It is supposed to bring actual change. Like this book actually made me think, and I don't know how much effect it had on that time when actually people was living in that situation. And just by using some animals and bunch of farmers, George Orwell opened the eyes of people. And that's what art is supposed to be about, I guess. One more example I can give is the picture of wars, like war pictures जो होती है, जो proper good war pictures होती है. You saw this, you see those people, you see those dead people, and it's not just about the dead people. They did not die because lack of hospitals or a medical issue or something like that. They died because other people killed them, and then lines of those people you see, and like where the humanity has gone, like what the fuck is going on. And that is the kind of thing that we can call art, because it just changes us from inside. It brings a change, and I think, yeah, what brings change is art, according to my definition. Obviously फिर बहुत सारा कंटेंट जो हम देखते हैं वो आर्ट की डेफिनेशन में नहीं आएगा, बट या अगर तुम टैक्सी ड्राइवर देखते हो, लाइक टैक्सी ड्राइवर का मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है. सो टैक्सी ड्राइवर कैन मेक यू फील व्हाट हैपेंस when masculinity is taken to its conclusion. I don't think there's a lot of books or movies around it where masculinity is taken to its conclusion actually. And Taxi Driver is one that movie, and I think it can that is why it can be called a piece of art. Now, yeah, I think that's what I think about art. Let me know your comments. Like, I just want to know what you think about art and everything down there. Just comment about it. Other than that, this is going to be my next book. Again, George Orwell, 1984. I'm going to actually read two books. Okay, I'm trying to read two books. I don't know I'll fail or not, but yeah. 1984, and the second book I'm going to read is Deep Work. मैंने order करा ली है, वो कल तक आ जाएगी, तो I'll start reading that. I know it's a classic one, and I just wanted to read something non-fictional. So yeah, that's why I ordered that book. I was, watching Carl Newport's YouTube channel for a long while. I know it's a very old book and everything, but people are discussing this idea around me a lot, so I thought, okay, let's give it a read at least. Other than that, I went to Cricket Museum in Pune. The best fucking experience I have ever had. I don't think I should be calling it the best fucking experience. Okay, my bad. But I think one of the best experience I ever had. I mean, you go there. It's actually in a society, so you go there. ठीक है, you go up to the left. लेफ्ट में एक्चुअली दो घर है, दो एक्चुअल सिंपल से घर जहाँ पे लोग रह रहे हैं, और दूसरी साइड तुम देखते हो देयर इज ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी, द बिगेस्ट म्यूजियम इन इंडिया, क्रिकेट म्यूजियम इन इंडिया. वहाँ पे लिटरली ऑलमोस्ट हर क्रिकेटर्स के बैट रखे हैं, ठीक है, और वहाँ पे
विराट कोहली का एक पूरा ऐसे कॉर्नर बना रखा है, सचिन के लिए एक कॉर्नर बना रखा है। सचिन का एक्चुअल बैट मेरे को खेलने का मौका मिला, उस प्रॉपर खेलने का नहीं बट एक स्ट्रेट ड्राइव करने का मौका मिला सचिन के एक्चुअल बैट से। विराट कोहली का बैट देखा जिसपे ओम लिखा था, एक्चुअली ओम और वन लिखा था विराट कोहली के बैट पे। और विराट कोहली का भी कोई ऐसा वैसा बैट नहीं, 2016 वाला बैट जो उसने आईपीएल में यूज़ किया था, जिसमें उसने 900+ रन बनाए थे, 4 सेंचुरीज बनाई थी, जिसमें से एक सेंचुरी 15 ओवर के मैच में आई थी। तो या आई सॉ दैट, and there was two guys there. There was one guy who was Indian, but there was other guy. His name was Phil, and he was, he was 60s something. So he has lived through the history of cricket. He has seen when the Caribbeans, the West Indies. The guy was from Caribbean, so has seen when West Indies was at the top of his top of the game. He has seen, a couple they win the World Cup from against West Indies, and he has seen the history of cricket. He's lived through it, and I'm just watching it from. And he was discussing so many things. He told ki, like how West Indies cricket is getting destroyed by IPL, and how it was not supposed to be a pink ball cricket. It was supposed to be orange ball cricket, and he was telling ki, like okay, test में अभी भी records बन रहा है, but ओडीआई में बिल्कुल रिकॉर्ड्स बनने बंद हो गए, बिकॉज एवरीथिंग इज फॉर बैट्समैन नाउ. सो एंड ही वाज आल्सो, आई थिंक आई डिस्कस्ड और ही डिस्कस्ड, लाइक नॉट every test player can play T20, but not every T20 player can play test. And it was really good discussions and everything. I just loved talking to him, and the museum was also great. If you're in Pune, you should definitely visit that museum, and you'll be just 2011 का धोनी का विकेट कीपिंग वाला क्लब देखने को मिल जाता. तुम्हें और क्या चाहिए तुम्हें और, ठीक है, एज अ फैन भी तुम्हें और क्या चाहिए. बट या, it's a great way to just walk through the history of cricket and discuss. It's just great. So yeah, I'll highly visit that. I'll highly recommend that. Yeah, that's it, I guess. This is for the podcast. अगर तुम्हें पसंद आया तो या प्लीज़ कमेंट एंड एवरीथिंग. I love seeing your comments. I love seeing your comments. Share, like, whatever. So yeah, bye bye.